हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर निधिश्री रावल फ्रॉम जेके शाह क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 3 एंड 8 रिवाइज करेंगे आपके बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट ऑफ योर CSEET एग्जाम। सो एक ओवरव्यू समझ लो चैप्टर 3 में आता क्या है। दीज आर सम टॉपिक्स जो चैप्टर 3 में कवर होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, पैराजम्बल्स, सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन। अभी इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस कंप्लीशन पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 एंड 2 का जो वीडियो बनाया था उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 3 टॉपिक्स: पैसेजेस, पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस करेक्शन। अभी जो आप PDF देखोगे उसमें जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे बिकॉज वही क्वेश्चंस आपके चैप्टर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी यहां पर एज यू कैन सी एक सेंटेंस दिया है, आई फाइंड इट हार्ड टू चूज बिटवीन दीज 4 फ्लेवर्स। अभी ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज सम ग्रामेटिकल एरर, देयर इज सम ग्रामेटिकल मिस्टेक। अभी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स सी ऑप्शंस क्या दिए हैं मिस्टेक के। आई फाइंड इट हार्ड टू चूज बिटवीन दीज 4 फ्लेवर्स एंड लास्ट ऑप्शन इज नो एरर। अच्छा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे नो एरर होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या है एंड अकॉर्डिंगली आंसर करना। अभी यहाँ पे ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी बिटवीन दीज 4 फ्लेवर्स। अभी क्यों ये गलत है, बिकॉज यूजुअली वी यूज द वर्ड अमंग। देखो, जब भी 2 जन के बीच कंपैरिजन होता है, जब भी 2 चीजों के बीच कंपैरिजन होता है, तभी हम बिटवीन यूज करते हैं। वी यूज अमंग वेयर देयर आर मोर देन 2 थिंग्स और पीपल। इसीलिए यहाँ पे जो गलत है वो क्या है, ऑप्शन सी। चूज द मोस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लीज स्टॉप इंटरफियरिंग इनटू माय रोमांटिक लाइफ। प्लीज स्टॉप इंटरफियरिंग इन माय रोमांटिक लाइफ। प्लीज स्टॉप इंटरफियरिंग फॉर माय रोमांटिक लाइफ। प्लीज स्टॉप इंटरफियरिंग विथ माय रोमांटिक लाइफ। आंसर इज ऑप्शन बी, प्लीज स्टॉप इंटरफियरिंग इन माई रोमांटिक लाइफ। ये ग्रामेटिकली करेक्ट फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस है। नेक्स्ट, यहां पर भी कुछ ऑप्शंस दिए हैं। 5 gallons ऑफ वाटर आर नॉट इनफ टू कवर द डिस्टेंस। अभी ये जो सेंटेंस दिया है, एज यू कैन सी इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पार्ट इनकरेक्ट है हमें उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। As in we have to identify which is grammatically incorrect. So यहाँ पे कौन सा grammatically incorrect है, that is option B. यहाँ पे R नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, is आना चाहिए। 5 gallons of petrol is not enough to cover the distance. Which one of the following sentence is करेक्ट? अगेन ग्रामेटिकली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। डॉक्टर्स इज ऑफन मॉक्ड फॉर बीइंग बोरिंग। डॉक्टर्स आर ऑफन मॉक्ड अप बीइंग बोर। डॉक्टर्स आर ऑफन मॉक्ड फॉर बीइंग बोरिंग। डॉक्टर्स आर ऑफन मॉक्ड ऑन फॉर बीइंग बोरिंग। आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर्स आर ऑफन मॉक्ड फॉर बीइंग boring. Next, choose the correct option. Your grammar is very good, but you need to work on managing your pronunciation. Your grammar is very good, but you need to work on modifying your pronunciation. Your grammar is very good, but you need to work on correcting your pronunciation. Your grammar is very good, but you need to work on repairing your pronunciation. So अगर आप यहाँ पे देखोगे, managing, modifying, correcting, repairing, इसमें से ही हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ग्रामेटिकली सही है
which is option C. We need to work on correcting your pronunciation. Next, choose the sentence that is grammatically correct. As soon as I boarded the train, I realized that I left my wallet at home. As soon as I boarded the train, I realized that I had left wallet at home. As soon as I board the train, I realized that I leave my wallet at home. As soon as I boarded the train, I realized that I had left my wallet at home. So answer is option D. यहाँ पर boarded आएगा और had left आएगा. Rearrange the following jumbled words to form a meaningful sentence. अभी ये सब जो यहाँ पे दिया है ये टोटली जम्बल्ड फॉर्म में दिया है. अभी हमें ये वर्ड्स को सही सीक्वेंस में सेट करना है ताकि एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके. द जंप्ड ओवर फॉक्स लेजी ब्राउन क्विकली द डॉग. Okay, so the right answer is option A. The lazy brown dog jumped quickly over the fox. Rearrange the following parts in proper sequence to obtain a correct sentence. The CEO of making the right decision was not scared despite a loss in profits. So let's see कौन सा ऑप्शन सही है. The CEO was not scared of making the right decision despite a loss in profits. So answer is option C is the right sequence, that is A, C, B and D. Usually जो words despite होते हैं, okay, these are like concluding words, despite, hence, therefore. All these are considered as what? Concluding statements. Arrange the following parts of the sentence in the correct order. Together, one of the causes of diabetes in Indians with stress ranks as poor diet. Let's see what is the right choice. Poor diet together with stress ranks as one of the causes of diabetes in Indians. So the right sequence is option D. Now let's practice some passages. Again, exam में आपको unseen passages पूछे जाएंगे and उसके related कुछ questions पूछे जाएंगे जो आप easily exam में from the passage find out कर सकते हो. So let's read what the passage says. In recent years, the global economy has undergone a profound transformation, with the digital economy emerging as a driving force behind this change. The digital economy encompasses vast array of activities and transactions conducted through digital technologies and platforms, fundamentally altering the way businesses operate and people interact. This transformation shift has given rise to new opportunities, challenges, and questions about the future of our economic landscape. The digital economy is characterized by its reliance on digital technologies such as internet, mobile services, and data analytics. It encompasses e-commerce, online advertising, digital payments, cloud computing, and the Internet of Things, among other sectors. This shift has not only disrupted traditional industries but has also created new ones, fostering innovation and economic growth. As the digital economy continues to expand, data privacy and security have become paramount concerns. The vast amounts of personal and sensitive data being generated and exchanged online have raised questions about how to safeguard individuals' privacy
and protect against cyber threats. Governments and businesses are grappling with the need to strike a balance between innovation and regulation in this dynamic and ever-evolving digital landscape. This challenge underscores the ongoing evolution and complexity of the digital economy. Let's see what the questions are. What crucial challenges has the growth of digital economy presented as mentioned in the extended passage? Increased government intervention in the technology, rising cost of digital infrastructure, concerns over data privacy and cybersecurity, decline in the importance of digital innovation. Answer is option C, concerns over data privacy and cyber security. What are the key components of digital economy mentioned in the passage? Agriculture and healthcare, Internet of Things and e-commerce, blockchain and cryptocurrency, traditional industries and manufacturing. Answer is option B, Internet of Things and e-commerce. How has the digital economy impacted traditional industries? It has strengthened their market dominance. It has led to their decline and displacement. It has had no impact on traditional industries. It has encouraged traditional industries to adopt digital technologies. Right answer is option B. It has led to their decline and displacement. एक और passage करते हैं just for practice. Let's see. Academics has always been an essential part of human development. It prepares us to survive in the outside world and establish an identity of our own. However, is an individual's development restricted to merely academics? In India, from an early age, we have been taught that education is limited to the boundaries of academics only. The idea of getting into the field for gaining practical experience is always considered a hoax. This has hindered students' development. However, the truth is that education represents a considerably broader field than we know of it. Our teaching from the basics has been focused on getting good grades and job offers rather than being creative and unique. In the 21st century, the pure academic type of education is slowly paving way for a whole new type. The paradigm shift in the whole education system is evident. People have now come to understand that education is a 360-degree activity that should focus on students' overall development rather than restricting him or her to the classroom. Co-curricular activities that take place outside the classroom but reinforce or supplement classroom curriculum in some way have become a point of focus today. These activities help in the growth of the child in more than one way. Participating in such activities helps youngsters grow mentally, socially, and individually. Intellectual development of a student is developed in the classroom, but for the aesthetic development such as team building, character building, and personal growth, the students must step out into the outside world. For example, if a student is a part of a school football team, he or she will learn teamwork and coordination in a practical manner, which cannot be taught in the class. Similarly, in colleges and institutions, there is a need for practical exposure so that students can experience the actual working of an industry. For example, taking a student to a manufacturing firm will give him or her the real insight and better learning of the industry. Catering to this change
Most professional colleges, including B schools, have started providing practical exposure to the students through regular guest lectures, industrial visits, conference, seminars, cultural festivals, and so on. With industry visits, students are able to better identify their prospective areas of work in the overall organizational function. Moreover, they help enhance interpersonal skills and communication techniques. In addition, guest lectures are equally important for all-round development of the students. It is a great way for the students to gain maximum exposure as guest speakers talk about their real-life experiences and not what is there in the textbooks. Through such events, students are made to participate and coordinate different events wherein they get to know how exactly things are managed. Classroom teaching provides the foundation and co-curricular or extracurricular activities provide practical exposure and opportunities to implement what students learn in the classroom. This helps in developing the overall personality of the students, inculcating various soft skills in them which otherwise are difficult to teach. Clearly, life beyond academics creates creative and empowered professionals. Let's see. Students' development is hindered by limiting education to academic boundaries, getting out of the field, being creative and unique, gaining practical knowledge. Answer is option A, limiting education to academic boundaries. The shift in the education system means to restrict to classroom activities, to focus on academic development, to ignore 360-degree activity, to focus on overall development. Answer is option D, to focus on overall development. Co-curricular activities that take place outside the classroom do not help in teamwork and coordination, mental and social growth, intellectual development, character building. Answer is option C, intellectual development. क्यों? क्योंकि वो classroom के अंदर होता है. Guest speakers talk about all-round development, their real-life experiences, what is in the textbooks, gaining exposure. Answer is option B, they are real-life experiences. Classroom teaching provides practical exposure, opportunities to implement what is learned in the class, chance to learn soft skills, the foundation. Answer is option D, the foundation. And the last question, life beyond academics facilitates organizational functions, creativity, professional fields, industrial visits. Answer is option B, creativity. Okay, so ये थे आपके कुछ questions related to chapter number 3. Now let's go to the next chapter, that is common business terminologies. अब ये chapter जो है काफ़ी it's all about definitions, different business related जो definitions होते हैं उनके बारे में है. So let's see what are the questions. What is the most important meaning of surge in the following sentence? There has been a surge in demand for food delivery with more and more people staying indoors and practicing social distance. Rise, strong movement, a strong feeling, shortage. Answer is option A, rise. Surge का मतलब होता है rise. Fill in the blanks with the correct option. Bank rate. Maximum lending borrowing rate determined by local bank. Maximum lending borrowing rate determined by the overseas bank. Maximum lending borrowing rate determined by the State Bank of India. Maximum lending or borrowing rate determined by the Reserve Bank of India. Answer is option D, determined by the Reserve Bank of India. Which of the following best describes the word transaction? Tax paid on goods that are coming in or out of a country. A business deal involving exchange of money. The amount of business done during a particular period. The act of changing from one state to another. Answer is option B,
a business deal involving exchange of money. A or an is a guarantee given to the purchaser of an article promising to, keyword यहाँ पे क्या है, repair or replace if it is required within a specified time. Answer is option B, warranty. अगर आपका प्रोडक्ट वारंटी पीरियड में है तो आपके पास मौका होगा उसको फ्री में रिपेयर कराने का या तो कंप्लीटली रिप्लेस करने का. आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते. दैट मीन्स यू कैन नॉट आस्क फॉर refund. What does the term caveat emptor stand for? It's a legal doctrine, literally meaning let the manufacturer be aware. A legal doctrine, literally meaning let the authority beware. A legal doctrine, literally meaning let the buyer beware. A legal doctrine, literally meaning let the seller beware. Answer is option C, let the buyer beware. Now see, as a consumer, as a buyer, it is completely my right. ये मेरा हक है जानना कि अगर मान लो मैं कोई प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ, उसका पूरा रिसर्च करना, देखना कि वो सही है नहीं है, whether it is worth it to spend the money or not. So as a buyer ये मेरा right है जानना कि whatever product I am purchasing, उसके लिए जो भी मैं खर्चा कर रही हूँ क्या वो वर्थ इट है या नहीं. तो इसको बोलते हैं caveat emptor. Next, a list that contains information like courtroom number, bench and the position of the matter is called as cause list, checklist, court list, count list. Answer is option A, cause list. अभी देखो cause list मतलब क्या, ऐसे सिंपल वर्ड्स में समझो. इट इज़ लाइक कोर्ट का टाइम टेबल. ओके, जब आपको कोर्ट में जाना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मैटर कब आने वाला है. लाइक इज इट गोइंग टू बी बिफोर लंच, आफ्टर लंच, जजेस कौन है, हु इज द बेंच, हु आर द जजेस, एंड इन विच कोर्ट रूम नंबर डू यू हैव टू गो. सो दिस इज कॉज लिस्ट. अ lien on property or assets to hold it to pay or satisfy any final judgment is known as liability, attachment, execution, conviction. Answer is option B, attachment. Now see, what do you mean by lien? Lien का मतलब होता है liability. अगर आपने कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन जब लेते हैं तब हम कुछ भी प्रॉपर्टी असेट को गिरवी रखते हैं. अगर हम वो लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं तो बैंक के पास राइट होता है कि जो भी प्रॉपर्टी हमने गिरवी रखी है, मॉर्गेज या हाइपोथिकेट की है, वो क्या कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं टू सेटिस्फाई द लाइबिलिटी अटैच टू द प्रॉपर्टी. A dash is an agreement designed to address situation in which one or more of the entrepreneurs wants to sell their interest in the venture. Answer is option B, buy-sell agreement. तो एक entrepreneur को अपना business बेचना है, the other person wants to buy it. So both of them will enter into a buy-sell agreement. Laws that develop through case decisions by the judges but not enacted by the legislative bodies are known as common law, state law, special law, repealed law. Answer is option A, common law. Now see, कभी कभी जजेस के सामने ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि उनको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो कि ना ही किसी लॉ में लिखा है, ना ही किसी गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ लॉ बनाया है. बट द सिचुएशन डिमांड्स दैट द जज हैज टू टेक द डिसीजन. ओके, इवन दो इट्स नॉट रिटन इन द लॉ, बिकॉज इट्स अ फेयर डिसीजन टू टेक, इररिस्पेक्टिव वो लॉ में लिखा है कि नहीं लिखा है. तो ऐसे डिसीजंस जो जजेस अपने हिसाब से देते हैं, ना ही किसी गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर, ना ही किसी लॉ के बेसिस पर, तो उसको कौन सा लॉ बोलते हैं, कॉमन लॉ. Next, a stipulation that is binding on the signatories of a legal contract
and the breach of which entitles the aggrieved party to rescind the contract is known as condition. Now what do you mean by the word stipulation? Stipulation का मतलब होता है कोई भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना. अगर सपोज मैंने आपको एक कंडीशन दिया, इफ़ यू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, मेरी तरफ से आप सबको पार्टी मिलेगी. ओके तो मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट दिया है कि अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो आपको क्या मिलेगी, ट्रीट मिलेगी, पार्टी मिलेगी. अगर आपने वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन. व्हाट डज द एक्रोनिम CRISIL स्टैंड फॉर? Corporate Risk and Investment Services in London, Currency Regulation and Investment Standards for International Lenders, Credit Rating Information Services of India Limited, Consumer Rights and Investor Support in India and Lending. Answer is option C. It is a credit rating agency. A company's net worth divided by the number of shares that have been issued and paid up is known as EPS, balance sheet, profit and loss account, equity shareholding. Answer is option A, EPS. कैसे? Let's say for example, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मान लो है 1 लाख रुपीस. लेट्स से इसमें से हमने टैक्स को माइनस किया. लेट्स से टैक्स इज 20,000. बचा क्या अपने पास, नेट प्रॉफिट. लेट्स से नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर 1000. तो अर्निंग पर शेयर कितना होगा, 80 रुपीज. सो यही बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट इज earnings per share. Some action, normally the payment of money taken where there is no legal necessity to do so, but where some moral obligation is recognized, is known as ex gratia, ex parte, exchequer, ex ship. Answer is option A, ex gratia. Now let's say for example एक सिचुएशन समझते हैं. ड्यूरिंग कोविड ओके काफ़ी जो हमारे घर पे हाउस हेल्प्स आते हैं उन सब पे रेस्ट्रिक्शंस आ गया था. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउसेस. लेट्स से योर फैमिली डिसाइडेड कि चलो उनका सैलरी हम स्टॉप नहीं करते हैं, उनको सैलरी हम देंगे, बिकॉज अगर सैलरी नहीं दिया सो उनका घर कैसे चलेगा. ओके दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर हर. सो ऐसा किसी गवर्नमेंट ने बोला नहीं था कि मेड्स को सैलरी देनी है, किसी भी लॉ में लिखा नहीं था. बट यू एज एज अ फैमिली डिसाइडेड कि एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर हमें ये करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लाइक अ मॉरल ऑब्लिगेशन एज एथिक्स, ये आपको करना चाहिए. तो ये जो पेमेंट आप देते हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स ग्रेशिया. A term implying that goods transacted will be delivered at a future date on agreed terms is known as on-time delivery, forward delivery, consumer goods delivery, past delivery. Answer is option B, forward delivery. A consideration paid for the carriage of goods and on account of freight payable is called as freight expense, freight note, carriage note, shipment expense. Answer is freight expense. Basically it is your transportation cost जो आप देते हो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. Dash is an order of the court directing a person to act or refrain from acting in a certain manner. Injunction, decree, judgment, written statement. Answer is option A, injunction. जब भी कोर्ट मुझे बोलेगा मुझे कुछ करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए. Okay, so when the court will tell me what to do and what not to do, तो वो जो ऑर्डर होगा कोर्ट का उसे हम क्या बोलते हैं, injunction. Minimum number of shares for which applications have to be received by a company in a public issue before allotment can be made by it is known as
Minimum subscription, minimum equity allotment, paid up capital, issue capital. Answer is option A, minimum subscription. As per SEBI regulation, minimum subscription कितना होना चाहिए? 90%. अगर 90% shares सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो आपका IPO सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा. A date on which the records of a company are closed for the purpose of determining the stockholders to whom dividends, proxies, rights, etc. are to be sent is known as equity closure, record date, equity rights, preferential equity date. Answer is record date. मतलब record date के दौरान जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो क्या होंगे? क्लोज होंगे. ना ही किसी का नाम ऐड किया जाएगा, ना ही किसी का नाम रिमूव किया जाएगा. द ट्रांजैक्शंस विल कंटिन्यू बट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम ऐड या रिमूव आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ही होगा. एंड यूजुअली रिकॉर्ड डेट्स आर डिक्लेयर्ड बिफोर द AGM ऑफ द कंपनी. A matter pending decision by a court is called undecided case, sub judice, partly decided, prejudgment. Answer is option B, sub judice. मतलब अभी तक इस केस का डिसीजन आया नहीं है. Yet we are supposed to wait for the court's decision and इसको publicly भी हम discuss नहीं कर सकते. ऐसे केसेस को बोला है sub judice. A certificate issued by a responsible person to an individual about his conduct, ability, qualifications or credit is known as conduct certificate, testimonial, character certificate, mark sheet. Answer is option B, testimonial. Now see, usually testimonials तब होते हैं जब ये आपको ना job switch करना होता है. Let's say when I want to switch a job, मुझे एक resume बनाना पड़ेगा. एंड जब भी मैं अपना रेज्यूमे बनाऊंगी ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू राइट द गुड थिंग्स अबाउट मी. मैं अपने बारे में ऑब्वियसली अच्छी बातें ही लिखूंगी बिकॉज मुझे जॉब चाहिए दूसरे कंपनी में. अभी मेरे बारे में थर्ड पर्सन के क्या विचार है? नाउ सी, आई विल बी बेस्ट फॉर माई सेल्फ. मैं तो अपने बारे में अच्छी बातें ही बोलूंगी बट दूसरे पर्सन का मेरे लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? Whether I'm a good person, bad person, punctual, not punctual, good, bad, efficient, not efficient, इसको हम क्या बोलते हैं? Testimonial. So, a third person's point of view about me is called as testimonial. Dash is the process of transferring the ownership of securities after the death of the holder to the legal heirs. Transmission, transfer, surrender, buyback. सो अगर किसी भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है एंड डेथ के बाद किसी भी लीगल एयर को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप शेयर्स ट्रांसफर करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन. अनलॉफुल प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग मनी एट एन एक्सॉर्बिडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज. एक्सॉर्बिडेंट का मतलब वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओवरड्राफ्ट, एक्सेस क्रेडिट, एक्सटॉर्शियोनेट, यूस्यूरी. आंसर इज यूस्यूरी. यूजुअली ये पहले बहुत होता था जब भी लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स का सिस्टम हुआ करता था. गांव एंड रूरल एरियाज में ये ज़्यादा हुआ करता था जहाँ पे लोग बैंक्स पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे. सो लेट्स से अगर आप बैंक जाते हो, लेट्स से इफ आई गो टू अ पर्टिकुलर बैंक फॉर लोन, बैंक इज चार्जिंग मी 10% इंटरेस्ट. बट लेट्स से इफ आई गो टू सम लैंडलॉर्ड इज गोइंग टू चार्ज मी 25% इंटरेस्ट. मतलब लैंडलॉर्ड को मालूम है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा. दे विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ माई सिचुएशन बिकॉज आई एम रियली इन नीड ऑफ मनी. तो अगर आप ये एग्जॉर्बिडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? यूस्यूरी, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट राइट. A strategy used by mutual fund and other portfolio managers to improve the appearance of a fund's performance before presenting it to its clients or shareholders. It is known as fund management, window dressing, portfolio
एनुअल अकाउंटिंग. आंसर इज विंडो ड्रेसिंग. मतलब बाहर से सब अच्छी अच्छी बातें बताना बट एक्चुअली पोर्टफोलियो में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है. यू आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट द व्यू पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर जस्ट सो दैट दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर shares or company. Dash is a bond that pays no interest while the investor holds it. It is sold originally at a substantial discount from its eventual maturity value, paying the investor its full face value when it comes due. Corporate bond, zero coupon bond, municipal bond, foreign bond. आंसर इज जीरो कूपन बॉन्ड. सी कूपन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट. एंड जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जहां पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म IAS? इंडिविजुअल अकाउंटिंग स्केलिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स, individual accounting standards. Answer is international accounting standards. Which of the following best describes the word CRR? That is cash reserve ratio. Cash requested ratio between different banks notified by the RBI. Cash reserve ratio notified by the RBI from time to time. Cash retained report submitted by the local banks once in a quarter to the Reserve Bank. Cash required report by the banks to the RBI from time to time. So the right answer is cash reserve ratio. Which of the following best describes the word hedge? Hedge का मतलब होता है risk reduction. It is a way of giving a decision against someone in a law or court. It is a way of protecting oneself against corruption or other similar procedures. It is way of speaking angrily to someone who has done something wrong. It is a way of protecting oneself against financial loss or other adverse circumstances. Which of the following best describes the word damages? An extra payment an employee receives for selling a certain number of products. It is a money owed by one person to another. Compensation awarded by court of law for breach of contract in a civil litigation. An extra payment a customer pays for damaging the product before the warranty period. Answer is option C, compensation awarded by a court. Choose the correct option. A person who lives in a particular place or who has their home there. Domicile, native, citizen, resident. Answer is option D, resident. And the last question. Which of the following best describes the word retail trade? Consumer retains his purchasing rights. Sale of goods to all the suppliers. Sale of goods to the final consumer. Producer retains his trade rights on the product. Answer is option C, sale of goods to the final consumer. So I hope आपको एक idea आ गया होगा that chapter 3 and 8 में से कैसे questions आते हैं. And here we finish the entire revision session of your CSEET Business Communication subject. I hope आपने सारे जितने भी videos upload हुए हैं related to this subject ये देख लिए होंगे. I wish you all the very best for your exams. Thank you.